यस सर। यस सर, विजिबल है। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट कर लिया है, ठीक है, और तीनों एक्सपेरिमेंट को जो है मैंने क्लासरूम में असाइनमेंट भी क्रिएट कर दिया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ग्रुप 1 जो है वो परफॉर्म कर चुके हैं। आप लोगों का रह गया तो इसलिए मैंने अभी तक असाइनमेंट क्रिएट नहीं किया है इस एक्सपेरिमेंट का, तो वो मैं आज क्रिएट कर दूंगा। एक हफ्ते के अंदर आप उसे सबमिट कर देंगे नेक्स्ट टर्म से पहले, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट किया है। एक तो आपने किया था एबीसीडी पैरामीटर पे था, दूसरा आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे था, और तीसरा ओवर करंट रिले था, ठीक है, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। ये चौथा एक्सपेरिमेंट है कि टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर वोल्टेज रिले। Okay, so in this experiment we have to draw the characteristics for over voltage relay, and that will be the relation between the trip voltage and the reset voltage. Okay, I will show you the reading here. Reading is given here, so you have to plot the this trip voltage and reset voltage or setting voltage. Okay, you have to plot these characteristics between V setting and V trip. So in order to perform this experiment, this is your circuit diagram. Let us first show me the over voltage relay. This is your over voltage relay. Okay. So in this we have this operating coil here, okay, and there is another mechanism. In this also, as you have seen in the over current relay, there was a plug setting multiplier in order to get the current rating of the relay. Okay. So here also we have a setting for different voltage ratings of the over voltage relay. Okay, you can see here 121 volt, 126.5 volt, 132 volt. Okay, so its normal operating voltage is 110 volts for this over voltage relay, but we have different settings of this voltage at which we can fix the rating of the over voltage relay by plugging this green color plug to add some other locations. So this is your over voltage relay. Now you will connect this over voltage relay in this manner. This is your circuit diagram. You have to take the supply through the auto transformer, okay, and you have to connect it to the two terminals of the over voltage relay. So these two terminals are actually connected across the operating coil of the over voltage relay. Okay, here you have the voltmeter which is connected here in parallel with this operating coil, or you can say across the auto transformer, in order to measure the voltage, setting voltage, or the reset voltage. Okay, so the equipment which is required to perform this experiment is your first over voltage relay, voltmeter, and auto transformer. You can also mention the rating of the auto transformer here from 0 to 250 volt. Okay. And what you have to do, you have to just connect this as per your circuit diagram. You have to connect the connections, and then you have to change the input supply to this relay through this auto transformer. So this is our observation table. So first you set the have a setting voltage of 120. You see here, this one. So you first put this plug in this point of 121 volts. So this will be your setting voltage of the over voltage. Okay? Then you change this setting. You have to keep this at 126.5 or 127, whatever it is, 132 then. So you have different setting of this relay. So you first put it at 121 volt. So you have set this voltage setting of this is 121 volt. Then you will increase this auto transformer voltage such that this operating coil of the over voltage relay will operate and energize and treat the this circuit breaker. Okay, so once you are changing this voltage, okay, so see here, this is your setting voltage. So once this voltage becomes greater than this voltage, input voltage becomes greater than the 121 volt or the setting voltage of the over voltage relay, this relay will trip. So this relay has tripped when it has reached to 125 volts. So that 125 volt can be measured with the help of this voltmeter. Okay. Then what you will do, एक बार तो ये trip हो गया, now you have to reset this
over voltage relay so that it comes back to its इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ट्रिप करने के बाद हम इसे रिसेट करते हैं फिर से वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। तो क्या करेंगे, हम फिर से इस ऑटो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज सप्लाई इनपुट सप्लाई को कम करना शुरू करेंगे। वी नीड टू डिक्रीज द input supply. Okay, so once we are decreasing the input supply, then at certain voltage this rating coil of this relay will reset. Okay, so it will be measured with the help of this voltmeter. So this will be equal to 104 volt. The same step will be continued. You have to take the reading in second step, third step, fourth step, and fifth step. So in the second set of reading, you again change the plug, this plug. Okay, you change this plug, okay, or pin, and put it to 126.5 volt, or you can take it as 127 volt. So you have taken 127 volt, then you again increase the voltage with the help of this auto transformer. Then the relay will trip and the voltage will be measured, so that will be 134 volt. And then again you reset the this relay, and you have to measure the voltage with the help of this voltmeter. So it will be 118 volt. फिर आप सेटिंग को चेंज करेंगे, फिर इसी तरह से सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है इन ऑर्डर टू प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ सी हियर, दिस इज द कनेक्शंस ऑफ द connections has been made here as per the circuit diagram. This is the input supply and this is given connected to the auto transformer. Okay, and these two terminals of auto transformer are connected across the voltmeter, and this voltmeter, it is connected to the relay coil. Okay. This is the circuit diagram. You can observe this reading in this video also. I will show you the video. Okay, see the video. Okay, this is your circuit diagram as I have shown you. Yes, sir. Your circuit auto transformer. Okay, so you have to 20670 volt. You can change the input which is mentioned here. See here two connections are given. You can get this different voltage from these to get up to 270 volt at EX and between those. Okay. This is your relay or voltage relay. See here, this one is your reading coil. This is your plug or different settings. Okay. It is an instantaneous over voltage relay. It means that once the voltage without any delay. So this is instantaneous over voltage relay. Okay, see here the different settings of this relay. So initially you have it at 121 volt. Okay, and you take the observations.
are the flags. Okay, it will be shown either in red or green color. तो ये यहाँ पे मिट्टी है, ये देखिए अभी ट्रिप होगा तो ये रेड दिखने लगेगा, यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा रेड कलर. So this is the flag actually. Now you can observe the reading. Since it is at 121 volt, you can observe the reading process of it. Here the voltage, what is the value of this voltage? Here it's 140 volt. Okay, so I think the setting has been changed now. It has gone 36 volt, I think. The whole of the unit is taken out from the cabinet in order to show you, or in order. आवाज आ रही है? Am I audible to all of you? Rohit? Yes sir. Yes sir. जी डॉक्टर ठीक है, साहब आवाज आ थोड़ी रही बात ये वीडियो आप लोगों ने ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा था. सर बस थोड़ा लैग कर रहा था बाकी. हाँ, लैग करेगा. मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो आप लोग अपने मोबाइल के सिस्टम पे भी देख सकते हैं. ठीक है, वो कुछ वीडियो में कुछ खास चीज़ें नहीं है, बस ये है कि जो रिले है उसमें कनेक्शंस वगैरह क्या है, अंदर किस तरह से बना हुआ, वो चीज़ आप देख सकते हैं. बाकी जो सर्किट डायग्राम और फोटोज जो लगे हुए हैं, आपको पता जाएगा कि हाउ यू मेक द कनेक्शन एंड हाउ यू टेक द रीडिंग. ओके, तो मैं इसका असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ. आप लोग इसे सबमिट कर देंगे और ग्रुप 1 को भी बता देंगे, जो ग्रुप उन्हें भी बता देंगे कि सबमिट कर दें. ओके, तो नेक्स्ट चलते तो आप लोगों का सेशन है. मैं ऐसा करता हूँ कि मंडे सेशनल है ना, नेक्स्ट वीक में. नेक्स्ट वीक में आप लोगों का सेशनल है ना, तो सेशनल में तो आप लोग कर नहीं पाएंगे.
गिव यू, यस सर। मैं ट्यूसडे तक का टाइम दे देता हूँ, अक्टूबर 12, ठीक है, 12 अक्टूबर तक कर लेंगे। यस सर। ओके ठीक है, तो मैं ट्यूसडे तक का दे देता हूँ आपको, वहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। ओके ठीक है रोहित, मुझे अटेंडेंस भेज देना। थैंक यू। चलो थैंक यू। कुछ पूछना है इसमें तो पूछ, कुछ पूछना है? बताओ बच्चों, कुछ पूछना है? नहीं सर। चलिए थैंक यू।